Good morning to all of you. Students, as we are going through the chapter The Industrial Revolution, today we are going to discuss about the cotton industry. So let's start the topic. Cotton industry, that the British had always woven cloth out of wool and flax. Generally, they were not using the cotton at that time, and flax is used to make the clothes of linen. And when they started the cotton, they generally import bales of cotton cloth from India at great cost. उस समय इंडिया के जो वीवर्स थे, they weave the finest cotton clothes, and that has a huge demand in the European markets. And the most of the cotton clothes have been purchased by the European countries. Britain was one of them. And with the time, as the East India Company had been established in the Britain, the political controls of this East India Company over India make it easier for the British to import the clothes, and raw material or the raw cotton had been also taken by these Britishers, and now they could be spun and woven into clothes into England. Till the early 18th century, spinning had been so slow and laborious that 10 spinners were required to supply sufficient yarn to keep a single weaver busy. Meanwhile, they were working in the making of threads. The weaver was sit idle, means he do not have any kind of work at that time, and it was a difficult task to sort out this problem. When the technological development took place and some kind of invention had taken place, this was very successfully fill the gap. Fill the gap in the sense that okay, now there is the thread had been produced with the machines, and weavers have the work. And another method that had been used by the Britishers, that to make it even more efficient, production gradually shifted from the homes of spinners and weavers to factories. If you remember of class 10th, you will find that the new merchants and the traders, they moved towards the countryside, and in these countryside areas, the people have leisure time, and they used to work for these merchants. और वहाँ पे थ्रेड को जो है तैयार किया जाता था, और वहाँ से थ्रेड को लेके जो है ये वीवर्स को फैक्ट्रीज में अवेलेबल कराया जाता था, और इस तरीके से जो प्रोडक्शन है वो किया जाता था. इसे भी जो है जो गैप था वीवर्स और स्पिनर्स के बीच में, उस गैप को भरा जा सका. The industry had two features which were also seen in other industries. Let's find out the first, that the raw cotton had to be entirely imported, and a large part of the finished cloth was exported. This sustained the process of colonization. जो रॉ मटेरियल था वो तो कॉलोनी से लिया जाता था और बाद में उसी को एक्सपोर्ट किया जाता था, और डिमांड ऑफ द रॉ मटेरियल आल्सो मेक दीज यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज टू मेक द कॉलोनी, और दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉलोनी इज नोन एज द कॉलोनाइजेशन. हुआ क्या कि रॉ मटेरियल की ज़रूरत में या उसकी डिमांड बढ़ने पर जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो मूव करी अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे जो कंट्रीज थी डेवलपिंग थी और जहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफ़ी वीक था. उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों ने वहाँ पे अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की, और इसका बेनिफिट ये हुआ कि नाउ इफ दे हैव द पॉलिटिकल पावर इन दिस कंट्रीज, so they can easily make rule and regulation in favor of the trade that they want, and that's why they easily obtain the raw material. और जब वो रॉ मटेरियल उन्हें मिल जाता था उसको वो भेजते थे इंग्लैंड में, जहाँ पे वो फाइनेस्ट गुड में कन्वर्ट होता था, और उसको फिर दोबारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता था इन्हीं कॉलोनीज में, और इससे उनका जो मुनाफा था वो डबल ट्रिपल और उससे भी ज़्यादा होने लगा. तो ये उसका सबसे बड़ा फ़ायदा था. और सेकेंड इज, ब्रिटेन could retain control over the sources of raw cotton as well as the market.
नतीजा यही हुआ कि जो ब्रिटेन था वो इजीली उसके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल था और साथ ही साथ उसके पास मार्केट अवेलेबल था, और इसके साथ साथ जो कैपिटल था वो भी इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन द सेंस दैट के व्हाट द बेनिफिट दे गॉट that had been stored with the EIC, it means the East India Company. So this was one of the best method that had been used by these merchants or the traders of that time. Now let's find out what were the some important inventions that took place during this industrialization age in Britain or other parts of Europe. So here are the some inventions. तो चलिए देखते हैं। पहला है the flying shuttle loom. This had been designed by the John Kay in year 1733, and this machine, the flying shuttle, made it possible to weave broader fabrics in less time. अब कम समय में ज़्यादा काम हो सकता था, तो ये इस मशीन का जो है इम्पोर्टेंस है, इसकी खास बात थी। सेकेंड मशीन इज, here is the image of the John Kay's flying shuttle. Second machine is the spinning jenny. It was also one of the most popular machine of that time, and this machine made by the James Hargreaves in year 1765. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। और in this machine a single person could spin several threads of yarn simultaneously. मतलब अब जो है यार्न का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे इजीली एक आदमी कर सकता था। ये इस मशीन की खास बात थी, स्पिनिंग जैनी की। और आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जब ये स्पिनिंग जैनी इंट्रोड्यूस हुई तो इसका जो स्पिनर्स थे जो मैनुअली वर्क करते थे उन्होंने इसका काफ़ी बड़े पैमाने पे विरोध किया, मतलब दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस मशीन। हियर इज द थर्ड इन्वेंशन, दैट इज द वाटर फ्रेम। अब इस वाटर फ्रेम मशीन को यहाँ पे आप देख सकते हैं, और this machine had been invented by Richard Arkwright in year 1769. It produced a much stronger thread before. सबसे खास बात ये है कि जो अभी तक थ्रेड थे वो कंपैरेटिवली जो है वो वीक थे, और इस मशीन के आने के बाद से जो थ्रेड है उसको मजबूती मिली। एंड द फोर्थ इज द म्यूल। दिस मशीन, it was the nickname of this machine, and this machine was invented in year 1779 by Samuel Crompton, that allowed the spinning of strong and fine yarn. Approximately both the machines are, अगर हम इसकी बात करें द म्यूल की, तो ये जस्ट इसका एडवांस वर्जन है। और इन मशीन्स को और इनके जो इन्वेंटर है इन सभी को आपको याद रखना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। So let's find out the fifth one, the power loom. Power loom, I think this is the technology that is existed today also. बस ये भी अपने modified form में है, जो कि आपको अपने आसपास के एरियाज में देखने को easily मिल जाएगा। This machine had been invented by Edmund Cartwright in year 1787, and this was easy to work, और ये stopped automatically every time a thread broke. जब भी कभी धागा टूट जाए तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही बंद रहती है। एंड कुड बी यूज टू वीव एनी काइंड ऑफ मटेरियल, मीन्स कॉटन, वूल और लिनन के लिए जो भी मटेरियल आपको बनाना हो, ठीक है, उन सभी मटेरियल के लिए ये मशीन इजीली यूज की जा सकती थी, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। तो लेट्स चेक आउट दैट व्हाट वी हैव लर्न टुडे। सो स्टूडेंट्स, इन द बिगनिंग वी हैव फाइंड दैट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज वन ऑफ द most important industry of industrialization age, and it began with the manual work which take time, but with the invention of the different kinds of machines we have seen that how the with the improvement of technology these had been also improved, and that's all about it. Let's find out some questions. Here are two questions. The question number one is, write about the major inventions related to the cotton industry and their important features. So this is all about the work that you have to do in your notebook. You have to find out the different kind of invention
that has been done by the different people, and what were their characteristics. And the second is that how the colonization helpful for industrialization in Britain. So students, these are the two questions which you have to do in your notebook, and thank you. Have a nice day.